चलो अभी ये करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 रेप लिमिटेड एंड फ्रेया let's do this okay पूरा let's apply our new strategy which is to solve easy sums first and then let's go to the harder ones. So carry work to be carried out tax assistant Shleya Hughes and tax managers Canada. I need you to prepare some notes in preparation of one internal meeting with the rest of the engagement team. The notes should be set out in a manner which will make it easy for you to refer to them during the meeting and should address the following issues. Knowledge obtained from advising our clients. We have many existing clients which trade from permanent establishments situated overseas. And a few years ago, we had a client with a presence in the country of the area and identify the points which should be made in order to explain the extent to which Rep Limited can benefit from the knowledge our firm has gained from advising other clients. See, first of all, as ACCA professionals, we have to follow the ACCA code of conduct and the fundamental principles governing it. Therefore, we must comply with all of the principles which are integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, and professional competence and due care. In the current scenario, we have been stated that we have existing plans which stay from permanent establishment which are situated overseas. Now we had certain clients. Now we had a particular client with the presence in the country of Ghana before. This was our ex-client, and as ACCA professionals, we have and as professionals, sorry, as only professionals, हम ऐसा देखते हैं, बात में बार-बार ACCA नहीं डरते. As professionals, we have the principle. We have to follow the principle of confidentiality for our ex-clients as well as our current clients. So therefore, we must not leak or share any confidential information relating to our ex-clients with our existing clients. We should only take up the experience and expertise which we have gained by working for our ex clients so that work can be done at a faster pace than the normal one. बस इतना लिख देंगे ये. अच्छा, इन्होंने ना प्रिपेयरिंग नोट्स बोला तो अभी इनका फॉर्मेट जरा जरा देख लेते हैं. मीटिंग नोट्स क्लाइंट पर्पस प्रिपेयर्ड बाय डेट, ऐसे ये लोग लिखते हैं. ओके. नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम एडवाइजिंग अदर क्लाइंट्स. मैं इसके बस स्क्रीनशॉट लेता हूँ, रुक जाओ. नोट्स फॉर मीटिंग. Knowledge obtained for advising other clients. We have experience of advising clients trading with permanent establishments situated overseas. We have also advised on trading in the country of Ghana. We will be able to use general experience and expertise for the benefit of Rep Limited. However, we must not use any confidential information obtained as a result of our professional and business relationships for the benefit of Rep Limited or any other client. Confidentiality is one of the fundamental principles of ethics within ACCA Code of Ethics and Conduct. Wherever a principle of confidentiality applies to confidential information obtained in respect of both ex-clients and the continuing clients. ठीक है. जनरल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज बोला, ये वाले वर्ड को मार्क करेंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ए पार्ट. बी पार्ट मैं फिलहाल 10 मार्क का बहुत बड़ा है, छोड़ रहा हूँ. बी का सेकंड पे जाता हूँ. इलेक्शन टू एग्जाम प्रॉफिट्स ऑफ J Limited's overseas permanent establishment in the UK list the implications of making this exemption. बहुत ही छोटा आंसर है, इजी आंसर लग रहा है. Election to exempt the profits. If the election to exempt the profits of J Limited's overseas permanent establishment from the UK tax has been made, then uh, then क्या क्या होगा सबसे पहले तो then then there are certain things that should be first noted, such as the profits will be exempt from being taxed in the country of in the UK. Even the losses which were previously transferred from J Limited from the permanent establishment will also not be allowed. Even vice versa, J Limited's losses cannot be transferred to permanent establishment. Um,
The election which has been made to exempt the profits of J Limited Overseas Permanent Establishment from UK tax will be irrevocable, and it will apply to all the future overseas permanent establishments which have been formed in that नहीं permanent establishments which have been formed in that country. मैं बोलना नहीं चाहता हूँ. I think ये in general रहेगा. Capital allowances cannot be claimed. ठीक है. I think इतना ही है. और क्या है, और कुछ है? लॉसेस नहीं कर सकते, प्रॉफिट्स नहीं कर सकते, इरिवोकेबल है, इसको है कैपिटल अलाउंसेस है. हाँ आई थिंक इतना ही है. नो गेन नो लॉस ट्रांसफर है क्या? नहीं. नहीं आई थिंक इतना ही. चेक करते हैं. ये पहला आंसर है, बड़ा आंसर. इसको जाने दो. जे का सेकंड वाला कहाँ गया? हाँ ये रहा. इलेक्शन टू एग्जाम profits from J Limited's overseas PE from UK tax. This election is available to UK resident companies which generate profits from PEs situated overseas. If J Limited makes this election, the profits in area would no longer be subject to corporation tax in the UK. If no election is made, UK corporation tax would be payable on the profits in area at the rate of 12% after DTR. मतलब 12% ज्यादा. ठीक है, हमको भरना पड़ेगा. नो रिलीफ विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ यूके in the UK in respect of any losses generated by the activities in area. It is irrevocable. It would apply to all future PEs of J Limited. ठीक है, ये हो गया. गुड. ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. Control foreign company. I can confirm then that CFC charge will not arise if J Limited is resident in area. However, I want to provide Lemar with an explanation of the purpose of CFC rules and charge which can be levied under them. ओ, चार्ज की बात कर रहे हैं लोग. शेड. ओके, मेरे को ये वाला मैं बाद में करता हूँ अटेम्प्ट. मुश्किल लग रहा है. वैट है क्या ये? हाँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय रेप लिमिटेड. ओके, नीचे क्या है? नीचे सेसेशन ऑफ बिजनेस है और ये प्रपोज गिफ्ट ऑफ ट्रस्ट है. ठीक है, तो फिर ये IHT है. थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब बात कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. अभी तो धीरे धीरे करना पड़ेगा. अब तक कितने 8 मार्क का किया अटेम्प्ट. ठीक है, इसके ऊपर कर लेते हैं अटेम्प्ट. Purchase of investment property by Rep Limited Exhibit 1. Explain how opting to tax the building would enable Rep Limited to recover value-added tax charged by the vendor, and explain whether or not the advice from Lamar's friend is correct. There is no need for you to consider partial exemption or capital goods scheme. ठीक है. मेरा purchase of investment property. Directors are considering the purchase by Rep Limited of a new unused commercial building situated in UK for 2 lakh plus 20% value added tax. Rep Limited of a new ठीक है. Rep Limited would grant a 20-year lease of this building to one of a number of different businesses. They are currently in discussion with. Directors are keen to recover VAT charged by the vendor on the sale of the building. Lemar told me that one of his friends has suggested that they could do this by opting to tax the building before granting the lease, and that this would have no effect on their tenant and potential future purchaser. नहीं, ये तो गलत है. The friend's advice is wrong, as if we are opting to tax the building, then that means we are able to recover the input VAT which was being claimed by the vendor, or which was being मतलब वो recovered by the vendor ऐसा. uh, so therefore if input VAT is recovered of, ये देखो 2 लाख के ऊपर 20% मतलब 40,000 का. If input VAT is recovered, then that means whenever we rent out the building or if we sell the building, then we also have to account for the output tax. In the current scenario, we can see that Rep Limited of a new unused, तो ये new बोला गया है, so that means it is within 3 years, and therefore standard rate supply will apply. Okay. तो हमें आउटपुट टैक्स के लिए अकाउंट करना पड़ेगा, एंड इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम. ठीक है ना, तो ये फ्रेंड की एडवाइस वैसे गलत है. और क्या बोल सकते हैं यार? if he if he does not opt to tax the building, then okay, then output tax cannot be recovered, or output tax should not be claimed, and then there will be no effect on their मतलब वो tenant and potential future purchaser. ठीक है ना. But again, even input VAT would not be claimed in such a situation.
ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये रहा सजेशन। रिकवरी ऑफ इनपुट, purchase of investment property, recovery of input VAT on the purchase. When Rep Limited grants a lease of the building to a tenant, it will be making an exempt supply. Okay. When Rep Limited grants a lease building to a tenant, therefore Rep Limited will not be able to recover any VAT in relation to purchase of the building unless it makes an election opting to tax. हाँ, तो मैंने वही बोला ना, इलेक्शन ऑप्टिंग टू टैक्स है भाई। तो हमें, मैं तो पूरा आंसर जो दिया मैंने इसी assumption पे दिया कि वी आर इलेक्टिंग टू ऑप्ट द टैक्स। Now, suggestion from friend. This statement is not necessarily correct for the following reasons. No impact on tenant. If rep limited opts to tax the building, it would be required to charge VAT on monthly rental payments due from the tenant. This will not be a problem where the tenant is able to recover all the VAT charged. The effect on the tenant will depend on the type of supplies being made for VAT purpose. If the potential tenant is not making future taxable supplies, then it will not be able to recover all of the VAT charge. This will represent an additional cost which may impact the tenant's decision to rent the building, and if so, at what price. No impact on the future sale of the building. While the option to tax remains in place, Rep Limited would be required to charge VAT on the sale of the building. This could impact on any eventual sale prices achieved if a future purchaser were not able to recover some or all of the batches। पर परफेक्ट है, सही है ना? परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हम हमने भी सेम आंसर बोला था कि अगर हमने ऑप्ट टू टैक्स किया तो फिर हम लोग को टेनेंट से को चार्ज करना पड़ेगा और फ्यूचर सेल को मतलब वो चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने आंसर को बड़ा बहुत सही बनाया है। यहाँ पे अगर हमने नहीं चार्ज किया तो क्या होगा, खाली इन्होंने यहाँ पे एक लाइन ज्यादा ऐड की हुई है कि tenant will be able to recover this input VAT, this VAT which he is paying as input VAT, but it will depend on what kind of मतलब what supplies he is making। ठीक है ना? If he is not making fully वो taxable supplies, then he will not be able to recover the VAT charged। That is one line which they have added। I think इसका मैं बाद में notes बनाता हूँ। सेम ही आंसर था, but आंसर it was well written actually by them। ठीक है, ये भी हो गया। तो 8 and 13 मार्क्स का हो गया। आई थिंक सीएफसी कर लेते हैं अटेम्प्ट, क्योंकि अभी बाद में फिर धीरे धीरे बड़े आंसर्स आने ही वाले हैं। CFC, I can confirm that CFC charge will not arise if jailbird is resident in area. However, I want to provide Lemar with an explanation for the purpose of CFC rules and charge which can be levied under them। A CFC, a control foreign company, is a company which has been controlled by is a foreign company which has been controlled by a UK company। In a CFC is basically formed so that artificial profits can be diverted and less tax is paid in those foreign companies rather than paying tax in the UK companies। Such transactions take place because of which GAAR, which is General Anti-Abusive rules have come into play, and various CFC rules have been applicable because of that। अभी अभी कैन कंफर्म एग्जिबिट 2 का तो कुछ काम ही नहीं है, एग्जिबिट 1 ही में ही है, 1 में ही है ये सब जो है। Let us be loved। इसका भी कुछ काम नहीं है वैट का, यही होगा मुझे लग रहा है। Additional information में rep is not involved in a joint venture of of this nature before, has no experience of carrying on business outside the UK। Lemar told me that he had been provided the following information relevant। It is not yet been determined whether J will be resident in the UK or in area। If J Limited is a resident in the UK, it will be carrying on its business through a permanent establishment in area and will consider making an election to exempt overseas। ठीक है, confirmation has been received that if J is resident in area, this will not result in charge under the control for। हाँ, ये तो perfect है कि if he is not a resident, if J Limited is not a resident, then control foreign company rules will not apply।
ये लाइन तो परफेक्ट है। ये देख लेते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन जे लिमिटेड। द डायरेक्टर्स ऑफ रेप लिमिटेड आर इन डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ऑफ क्रो लिमिटेड एंड unconnected company regarding establishment in the new company J Limited. Both Rep Limited and Crow Limited are UK resident companies which prepare accounts to 31st of March each year. J Limited would commence trading on 1st of April 26, carry on this business activity in the country, whether it would manufacture computer components, business profit generated in area subject to 13% business tax in the country. तो ठीक है। Government is proposing Rep would own 30% of the ordinary share capital of J Limited with Crow Limited owning remaining 70। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली कंसोर्टिया वाला सीन बन रहा है। Lemar is follow directors regard potential investment as somewhat risky such that it would decide to proceed। कुछ ऐसा दिया नहीं है सीएफसी चार्ज के बारे में रे। अभी हम लोग को अगर रूल्स बना मतलब बताने हैं तो सीएफसी चार्ज और क्या, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसे पॉइंट्स ना। तो ये बोल सकते हैं कि सीएफसी चार्ज यूजुअली डज नॉट अप्लाई बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सेप्शन सच एज excluded territories, current year acquisition, ऐसा कुछ तो है। Then if the company does not own 25% or more, then CSE rules do not apply. Low profits exemptions, low profit margin exemptions, uh, yeah, I think ये 5-6 कारण होते हैं। सीएफसी आज अप्लाई कैसे होता है उन्होंने पूछा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ सीएफसी रूल्स। पर्पस ऑफ सीएफसी रूल्स तो अपन ने बता दिया। एंड द चार्ज व्हिच कैन बी लेविड अंडर देम। चार्ज का मुझे आइडिया नहीं भाई। चलो आ जाओ चेक ही करते हैं, क्योंकि वहां पे भी ये देखो। द यूके सिस्टम चार्जेस यू द कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट्स इफ द यूके ओके ऑफ यूके रेसिडेंट कंपनीज हाउएवर it does not charge UK corporation tax on the profits earned overseas by non-UK resident company. A UK resident company could seek to exploit the latter rule by establishing a non-resident subsidiary in which to generate its overseas profits. The CFC legislation is designed to prevent overseas subsidiaries. Perfect। ये सब हमने बिल्कुल सही बोला है इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही। ठीक है ना, हमने बस गार के टाइम के फॉर्म में बोला, बट गार का आंसर भी आता है GAR का। अभी where the rules apply and no exemption is available, हमने सारे exemptions बता दिए थे। लेकिन where the rules apply and no exemption is available, UK resident companies own at least 25% of the CFC are charged UK corporation tax on their proportionate share of the CFC's chargeable profits। Okay, तो चार्ज ऐसा कुछ ऐसा वैसा स्पेसिफिक पेनल्टी टाइप नहीं है। इट इज जस्ट द यूके कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ सीएफसी चार्जेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, नाइस। ये अभी अपने को पता चल गया। एटलीस्ट 25% तो अपन ने बोला था। द चार्ज इज ओनली यूके कॉर्पोरेशन टैक्स जो अपन चार्ज करें। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक या दो मिल जाएंगे यहाँ से। तो 5 5 एंड 16 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट कर लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद बी का फर्स्ट एंड डी के 1 2। मैं बी के फर्स्ट पे जाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। डी का आई फील फिर भी थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कुछ है जो मेरा फिर भी बेटर है। Personal tax affairs. Cessation of Freya's business on 31st of March 2026. A calculation of Freya's estimated liability to income tax and class 4 NIC in respect of her final tax year of trading. An election has been made to prepare Freya's accounts on an accrual basis। ठीक है, इसके में मैं बाद में आता हूँ। बी का 2, proposed gift of shares to trust on 1st of November 2025। A calculation of IHT which would be payable by Freya if she were to give 20,000 shares in Dexil Limited to the trust on 1st of November 2025 as planned. Your calculation should indicate the availability of otherwise of all relevant annual exemptions
the payment date together with a brief explanation of how it has been determined. ठीक है, let's start with this. तो ये है बिजनेस के बारे में, ये रहा प्रपोज गिफ्ट ऑफ शेयर्स. आई एस्टेब्लिश्ड अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माय nieces and nephews on 1st of August 2014. I own shares in Dexel on 1st of November 25. I'm planning to give 20,000 of these shares to the trust. After I have made the gift, I will still own 60,000 share, which is 60% of the company. ठीक है. You okay? तो पहली शी ओन 80,000 शेयर्स आई फील, है ना. You have already advised me that these shares are not relevant business. मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, उन्होंने पूरा लाइफ टाइम कैलकुलेशन करने से मना नहीं किया है ना. परफेक्ट. सो लेट्स डू पूरा ही कैलकुलेशन. ठीक है. रेप लिमिटेड एंड फ्रेया. लेट्स डू पूरा ही कैलकुलेशन अभी. डी का सेकेंड पार्ट. लाइफ टाइम. ये नहीं करना, ये बाद में करना है. So number 25, you have advised me that these shares are not relevant business property for the purpose of BPR due to the investment activities of Dexel Limited. Accordingly, I am aware that the gift on 1st of November 2025 may result in an inheritance tax liability. If I decide to make the gift, I will pay any IST due, and I need to know by when such amount would fall due. ठीक है. या लाइफ टाइम के लिए, तो मुझे लाइफ टाइम के लिए ही क्या कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये मर नहीं रही है मुझे लगता है ना. तो CLT पे तो मैं कैश टू द ट्रस्टीज ऑन क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट. कैश टू द ब्रदर मतलब PET. ट्रस्टीज ब्रदर. एडिशनल कैश टू ट्रस्टीज तो मतलब फिर से एक बार CLT कैश टू सिस्टर. ठीक है. और अभी आता है 1 नवंबर वाला डेट ना. चलो भाई. ठीक है, चलो ये हो गया. डेट, अब डेट मुझे सबके लिखनी है. 1st of August 15th. 1st of February 15th. सॉरी, 1st of February 21. First of July 25. 1st of November 25. ट्रांसफर वैल्यू. मुझे ये करना है ट्रांसफर वैल्यू. 1,20,000. 35,000. 1,70,000. 45,000. इसके लिए रेफर करो वर्किंग नोट 1. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वर्किंग नोट्स में पहली ट्रांसफर वैल्यू ऑन 1st of November 25. वैल्यू बिफोर ट्रांसफर. वैल्यू यहाँ पे आएगी वैल्यू आफ्टर ट्रांसफर. ठीक है. बस 80,000 शेयर्स थे. 60,000 यहाँ पे मेरे बाद में बन गए. तो वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कितनी होगी. दिस माइनस दिस. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो. अब मुझे ये पूरा थियोरी पढ़ना देखो, क्योंकि मेरे पास, मैंने उसको 20,000 शेयर्स दिए.
उसके बाद में 60,000 ओन करता था, जो जो 60% मतलब वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेस एई वगैरह सब कुछ करके बैठ जाता है, एई ऑफ दी करंट ईयर, एई ऑफ दी प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो 3,000, 3,000 एंड 3,000 यहाँ पे कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे देखो 21, ये 2021 का ईयर है, उसके पहले और प्रीवियस ये जो है ये नेक्स्ट ईयर है, तो इसमें करंट ईयर का मिल जाएगा। अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम सिचुएशन यहाँ पे नहीं क्रिएट होगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ए वाले कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। चलो भाई, चलो ये हो गया। चलो ये भी हो गया। यहाँ पे दिस इनटू दिस करना है मुझे, एंड दिस इनटू दिस करना है मुझे। अभी ये हो गया। अभी आता है नील रेट बैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। इधर जो है मैं पूरा ही नील रेट बैंड यूज कर दूंगा, तो टैक्सेबल गेन्स क्या ही आएंगे फिर, है ना। दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस taxable gains, no nil rate band during lifetime for PETs, है ना। No tax during lifetime for PETs, ठीक है ना। पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स के लिए कोई टैक्स नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके लिए भी नील रेट बैंड अवेलेबल तो होगा ही, ठीक है ना। तो फिर अ, यहाँ पे मैं थर्ड में सेकंड वर्किंग नोट करूंगा, नील रेट बैंड अवेलेबिलिटी, नील रेट बैंड अवेलेबिलिटी हिल है 25,000 की। ठीक है, अवेलेबिलिटी ये मैंने कर लिया है। अब मैं अभी 7 साल पीछे जाऊंगा, मैंने 1,67,000, तो ठीक है, नो लाइफ टाइम टैक्स। IHT पेड पॉइंट, हाँ अभी वो क्या करना है वो पता नहीं है, ठीक है। अभी अभी थोड़ा स्लो जाते हैं, अभी यहाँ पे पहले वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पे सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन पे कर रहा था, आई नीड टू नो सच अमाउंट्स, पहले इनहेरिटेंस टैक्स लायबिलिटी। ये देखो वैल्यू अभी वो 80% पहले ओन करी थी, मतलब उसका शेयर प्राइस 24 का था, एंड देन वो बाद में उसका 60 पे गिर गया, मतलब यहाँ पे तो उसके बाद में उसका 17 का था, तो मतलब उसने वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर 9 लाख का किया हुआ है, ठीक है ना। चलो ये अपने को पता चल गया। Freya currently owns 80% of the ordinary share capital of Dexel. The remaining shares are company by individuals that have no connection to Freya. अभी कौन टैक्स पे कर रहा है? The calculation of inheritance tax which would be payable by Freya if she were to give 20,000 shares in Dexel to the trust on as planned. Your calculation should indicate availability of, ठीक है, payment date together with the brief explanation how it has been determined. I look forward to seeing you. अभी कौन पे कर रहा है टैक्स भाई? फ्रेया कर रही है कि डेक्सिल की वो ट्रस्टीज कर रहे हैं? आई विल पे एनी आईएसटी ड्यू एंड नीड टू नो बाय व्हेन सच एन अमाउंट विल फॉल ड्यू, ठीक है। नाउ आईएसटी पेड विल बी, इसका 0.2
मैं क्या बोलूँगा, 3,25,000 प्रीवियस 7 ईयर्स का ही आएगा ना। प्रीवियस 7 ईयर्स, प्रीवियस 7 ईयर्स में मेरा कौन कौन सा साल आता है? सो प्रीवियस 7 ईयर्स मतलब the nil rate band will be utilized by the CLTs transfers made in the in the previous 7 years। तो प्रीवियस 7 ईयर्स के अंदर क्या क्या आता है? प्रीवियस 7 ईयर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक साल आता है जिसके अंदर मैंने 1,67,000 ही यूज किया हुआ था। यह आता है मेरा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो दिस माइनस दिस इतने का मेरे को नील रेड बैंड अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर पीईटीज। एंड देन लास्ट में इतना नील रेड बैंड अवेलेबल ऑफ 1,58,000। तो टैक्सेबल गेन्स जो आते हैं वो आते हैं 7 पर। ठीक है ना? नो लेफ्ट टाइम फॉर पीईटी, लेकिन आईएचटी पेड फॉर सीएलटीज। फॉर सीएलटीज अभी देखो कौन पे कर रहा है। पहली बात तो जो पे कर रहा है वो है यही बंदी पे कर रही है ना। दिस वुमन इज ओनली पेइंग बिकॉज दे हैव सेड कि आई विल पे द आईएचटी, सो देयरफॉर इट विल बी इसका 0.2 20%। ठीक है ना? दस the IHT due will be 1,40,400 and will be paid by Freya herself. Thus, 20% was used. Now, the date of the transfer of gift was itna, which is between 01/10/2025 and 31st March 2026. Thus, 6 months later, the date of transfer, which is November, December, Jan, Feb, March, April. So I think 30th of April 2026। तो ये होगा डेट पेमेंट का और ये होगा उसका अमाउंट। ठीक है ना? ये मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक ये पूरे 8 मार्क्स तो मिल गए भाई यहाँ पे। एज फार एज आई थिंक करेक्ट होना चाहिए ये वाला वैल्यू। 9 लाख इनको बराबर आया। 25%। एक मिनट, सिंस द ट्रांसफर अकर्स ऑन द इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मे फॉल। ठीक है। और एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। व्हाट इज द आईएसटी पेबल? ये रहा। अगर डोनर पे करता है, वो अगर डोनर डोनर पे करता है तो 25% है। ओके ओके, इफ डोनर इज पेइंग देन इट इज 25%। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड दे हैव सेड कि ठीक है ये हो गया। 8 मार्क्स पूरे तो नहीं मिले भाई, पूरे तो नहीं मिले। एंड द ड्यू डेट दे हैव सेड 6 months ऑफ द लेटर ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। तो नवंबर का एंड होगा। नवंबर का एंड होगा तो फिर हमें आगे जाना है। आगे के पीरियड पीरियड में जाना है विच इज 31st of May, मई 2026। तो एक तो मैं साला मैंने ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें भी 25%। तो पूरा पूरा क्वेश्चन सही था भाई, पूरा लिटरली हमें हमें ट्रांसफर वैल्यू भी एकदम करेक्ट आया था। लेकिन हमने लास्ट में 20% कर दिया जबकि उसका 25% था। तो डोनर का 25% है, ट्रस्टीज पे करते तो 20% है।
एंड ड्यू डेट है मंथ एंड होने के 6 महीने बाद की। बहुत गलतियां भाई, बहुत गलतियां। ठीक है, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन किया अटेम्प्ट। अभी डी का फर्स्ट बाकी है और बी का फर्स्ट बाकी है ना? तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है। सेसेशन ऑफ फ्रेयाज बिजनेस ऑन फर्स्ट टर्न 31st of March 26। Cessation of Freya's business on 31st of March 2026. A calculation of Freya's estimated liability of income tax and ठीक है, national insurance contributions in class 4 in respect of a final tax year of trading in election has been made to prepare Freya's accounts on accrual basis। ठीक है, ये वाला पार्ट है। I am intending to cease my unincorporated consultancy business on 31st of March 2026. I began trading in 2017. I have always prepared accounts to 31st of March each year. My business is my only source of income. I will prepare set of accounts for the year ending 31st of March 26. The budgeted tax adjusted profit for this period before deduction of capital allowances is 94,000. So let's go. Tax adjusted trading profits 94,000. Capital allowances. Then again, ये कुछ तो आएगा मेरे को बेसिकली ये माइनस करने के बाद। और कुछ है क्या? द ओनली कैपिटल एसेट विद इन माई बिजनेस इज अ कार विच हैज बीन यूज्ड twice for 65% of the time. So working notes, first one, capital allowances. तो particulars, private business use asset, private business use asset, which is we TWDV carried forward, मैंने बोला हुआ है a particular amount का कुछ तो। The return on value of the car was for the last year was 8,700। तो मैं उसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया। उसके बाद लेस कैपिटल अलाउंसेस। लेकिन मैंने यहाँ पे बेचा है ना, आई एम सेलिंग इट, सो सेल ऑफ एसेट तो 11100। चार्ज 0.65। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्योंकि प्राइवेट यूज मेरा खाली 65% का ही है, तो अभी इसमें लेस तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मतलब बैलेंसिंग चार्ज आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। बैलेंसिंग चार्ज में ऐड कर दूंगा अभी। लेस पीए विच इज 12570। ठीक है ना, ये हो गया। अभी आता है 023770, 37700 से 125140, 37700, this minus this, 20%, 40%, this into this, ये आ गया मेरे को इनकम टैक्स लायबिलिटी एबिलिटी।
टैक्सेबल इनकम बराबर क्लास 4 NIC विच इज इसी का दिस। तो यहाँ पे आता है 8%, यहाँ पे आता है 2%, ठीक है ना। 8% आता है यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6% आता है क्लास 4 NIC। हाँ यहाँ पे 6% आता है। तो वो अपन वहाँ पे देख भी सकते हैं वैसे तो। वो क्या बोलते हैं अपने, वो टेबल्स में दिया जाता है। मेरा ऐड किया बैलेंसिंग चार्ज माइनस PA, ये सब टैक्सेबल। ठीक है, ठीक है, नाइस 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 डन। अभी आते हैं ऊपर, लास्ट बी का फर्स्ट अभी, लास्ट पार्ट बी का फर्स्ट, लेट्स गो। बी का फर्स्ट रेसिडेंसी ऑफ J लिमिटेड, explanations of the relevance of the country of residence of J Limited in relation to the amount of corporation tax payable in UK and area in respect of its profits, the relief available to Rep Limited if J Limited's business in area were to make a trading loss. Before you start, take some time to identify the different possibilities which need to be addressed, recognizing that it is not yet what percentage of J Limited will be owned by Rep Limited. तो मैंने थिंक ऊपर बोला था कि वो कंसोर्टिया वाला वाला सिचुएशन है। सो इन द करंट, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट क्रॉ लिमिटेड is proposing that it would own 30% of the ordinary share capital of J Limited। लेकिन यार मुझे याद नहीं आ रहा, कंसोर्टिया में 75% कंपनी को ओन करना चाहिए ना यार। वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ आई थिंक एक कंपनी को 75% ओन करना चाहिए। ओह, बट नहीं यार, हम लोग देते थे प्रॉफिट्स, हम लोग देते थे प्रॉफिट्स। सो मुझे लगता है लेट्स टेक दिस इनटू कंसिडरेशन पहले कि आई थिंक ये पहला वाला कंसोर्टिया ही है, ठीक है। मुझे लगता है पहला वाला कंसोर्टिया वाला वाला सिचुएशन ही है। हाउएवर लेमा एंड हिज फेलो डायरेक्टर्स regard their potential investment as somewhat risky, such that they decide to proceed, they may prefer to own just 20% of J Limited rather than 30%। if Rev Limited owns 20%, then Pro Limited हाँ increase to 80%। तो फिर ये देखो, हाँ मुझे लग रहा है पहला वाला कंसोर्टिया सिचुएशन है, सेकंड वाला 75% ओन सब्सिडरी वाला सिचुएशन है। देयरफॉर पहला अपन लिखेंगे, पहला कंडीशन है consortia situation or consortium condition in which Pro Limited is proposing it would own 30% and the remaining, nahi, Pro Limited is proposing that Rep would own 30% and Pro Limited would own 70%, ठीक है। हमें पूछा गया है रिलीफ अवेलेबल, ठीक है। तो अभी इफ फर्स्ट ऑफ ऑल the election to exempt the profits in the overseas permanent establishment of J Limited is not made, then the profits would be taxed at the UK rate and the losses would be allowable to be transferred and distributed among the other companies as well. So therefore, in the current scenario, if J Limited is making the loss, uh, then we can see that it would be an upward loss situation, upward loss set of situation. In upward loss set of situation during a consortium, how much percentage of how much percentage of uh, loss that I own, ऐसा है ना वो। Basically how much percentage I own, the losses would be transferred। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में तो ये प्रॉफिट कर रहा है क्या 27 का, हाँ। तो लॉस कौन कर रहा है, पहले वो चेक कर रहे थे, एक मिनट।
इफ जे लिमिटेड बिजनेस वेयर टू ओके वेयर टू मेक अ ट्रेडिंग लॉस, तो अभी हमें अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स तो निकालना ही है, एंड फिर हमें रिलीफ के बारे में बताना है। अगर कंसोर्टियम सिचुएशन है, सो देयरफॉर रेप वुड बी एबल टू कवर 30% ऑफ द लॉस विच हैज बीन इनकर्ड बाय जे लिमिटेड। ठीक है, पहले सिचुएशन पे। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में रेप इज, इट इज नॉट अ कंसोर्टियम सिचुएशन बिकॉज क्रो लिमिटेड इज holding an increased holding of 80%, which is more than 75%, and therefore Crow Limited and J Limited will come under 75% relief, group and gains group, because of which Crow Limited will be able to set off its would be able to take entire losses of J Limited with itself. ठीक है ना? There and therefore Rep Limited will not get any share in the losses incurred by J Limited. Uh, ठीक है ना? Therefore, in the second scenario in which Rep Limited is not in the group relief group, Rep Limited will not and not a consortium as well, it won't be able to claim any losses. In the first scenario, 30% of the losses made by J Limited हम लोग को मिल रहे हैं। अभी हम लोग को निकालना है यूके कॉर्पोरेशन टैक्स, निकालना है हम लोग को। ये 1,35,000 तो है ही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ, दिस इज, हमें हमें यूके कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना है, और हमें सारे कंडीशंस देखने हैं ना। सो इन द फर्स्ट कंडीशन इन विच अ कंसोर्टियम कंडीशन, इन अ कंसोर्टियम कंडीशन अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, divided by the number of associates that are in place of operations. Limitations would be restriction would be, अभी देखो इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज इन द करंट सिनेरियो देयर इज ओनली वन एसोसिएट। इन दिस सिनेरियो देयर इज ओनली वन एसोसिएट which is Crow Limited owning 70% of J Limited। और यहाँ पे क्या था, हमें यहाँ पे लिखना था एन एसोसिएट is a situation in which a company owns at least 50% of the other company। ठीक है ना? Therefore, the UK corporation tax would be particulars amount tax adjusted trading profit all of which will relate to its activities in Garia। तो 1,35,000, ठीक है ना, लेस कॉर्पोरेशन टैक्स लेस DTR which is lower of अभी लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या, एक मिनट, पहले तो ऐसे नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफिट्स टैक्स ऑन यूके रेट, प्रॉफिट्स
ऑन गेरिया रेट। तो कितने हैं, ये तो पूरा ही है। एंड देन प्रोपेगेशन गेरिया रेट, दिस इन टू गेरिया, गेरिया में कितना था, 13% था। नेट टैक्स पेबल इन यूके वुड बी, चलो भाई, 116,200। अभी यही सेम सिनेरियो मुझे लग रहा है कंसोर्टियम के, अभी इसके लिए मैंने कंसोर्टियम के लिए लिखा है। मैं अगर ये सेम चीज मैं एज अ सब्सिडरी करता हूँ तो भी सेम ही आता है भाई, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि है तो वो सेम ही ना भाई, लिटरल सेम आंसर आएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इफ ओन्ड एज अ सब्सिडियरी, if owned as a 75% subsidiary by Crow Limited, there's only one associated with Crow Limited, and they both also form part of the 75% group relief group and the gains group। चलो, ये यही मेरे को सेम अमाउंट आता है भाई, लिटरल सेम, कुछ नहीं है बदलाव, सब सेम ही है भाई। और मैंने कंसोर्टियम में उसका थ्योरी तो बताई है, वही 10 मार्क के लिए। पता नहीं इतना इनफ है कि नहीं, चेक करते हैं। B. Investments in J. The profit of the business will be generated by Geria regardless of where. Accordingly, the profits are always subject to, ठीक है Geria, the profits would be subject to UK corporation tax because, हाँ ये अपन ने assume किया हुआ था, याद होगा मैंने बोला था कि assuming that he is not exempting any profits। तो ये देखो, taxation relief बराबर है, UK corporation tax payable 16,200। तो उन्होंने दो कैलकुलेशन नहीं किया, उन्होंने एक में ही बता दिया। सो दिस वाज क्वाइट स्टूपिड एक्चुअली, ऐसे दो बार कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बात तो सही है। इफ जे इज रेसिडेंट इन एरिया, द प्रॉफिट विल ओनली बी सब्जेक्ट टू एरिया एट द रेट ऑफ, बराबर है, नोटेड। ये जे लिमिटेड वुड नॉट हैव अ यूके कॉर्पोरेशन। हाँ, तो ये अपन ने बाद में बोला था कि अभी assuming that he exempts the profit from the permanent establishment, then only tax that be payable will be in the country of area is of 13%. Will not have UK corporation tax liability. Any dividends received by Rep Limited and Co Limited from J Limited would be exempt from corporation tax। वो तो पता ही है। अभी ये, हाँ, if J Limited is resident in the UK, if rep owns 30% of J, तो ये देखो, J would be a consortium company because at least 75% of J, हाँ ये ऐसा था, at least 75% should be distributed amongst these amongst other companies, and each company should be owning at least 5%, right, ये ऐसा था। own companies, each of them at least 5% and less than 75%, less than 75% होना चाहिए, yes। In these circumstances, Rep Limited would be able to offset 30% of the J Limited's trading loss against its taxable profits। बराबर बोला था हमने। If Rep, हाँ लेकिन if Rep Limited owns only 20% of J, no relief will be available to Rep Limited in respect of the trading loss of J Limited because Crow Limited would own more than 75% of J Limited। Perfect। If J Limited is resident in area, then no relief। हाँ ये भी बराबर है। No relief would be available in UK for Rep Limited in respect of the trading losses realized। देन इलेक्शन का ये सेकंड वाला, हाँ ये अपन ने बोला, ये वाला तो सो सेकंड था। सो आई फील अपन ने ये बराबर अटेम्प्ट किया, अपन ने यहाँ पे मिस्टेक किया था यार, तो यार अपन ने यहाँ पे मिस्टेक किया था रे, 8 मार्क्स पे वाले वो ट्रस्टीज पे। तो आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग कॉल दैट वी टुक, बिकॉज अगर पेपर छूटता तो अपने को ये वाला क्वेश्चन लास्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये गलत गया और ये पूरा सही गया, फिर भी अपन ने इसको लास्ट में रखा। तो दैट वाज बैड कॉल माय पार्ट, ठीक है।